Recording in progress. So, Assalamu alaikum, and this is our discrete project in which we have to categorize the data and analyze it in accordance with the Excel sheet that is given. So the course is of discrete structures, and the members are Mohammed Aram, Mohammed Faiz, and our course coordinator is Miss Afia Zafar. So we actually were given this website of PBS in order to get the data from here, uh, to get the CPI data, and we have to analyze it. Now, in this data, we were actually given the 7 categories in which we have to uh, just get the data and then perform various operations on it in order to analyze the data. Now we're gonna go on to the codes so that we better understand how we are analyzing the data and what codes are we using. So first of all, starting with the first procedure in which we categorize the data in accordance with the categories that are mentioned in the project. So first of all, we use this pandas library in order to deal with the input and output, and then we've got this matplotlib in order to show the results in the form of graphs and uh, even in the form of any pictorial representation of the graph in the form of tables or whatever you want. Now, we have these categories, so we actually define certain products into these categories already, so that whenever we match any of these products, it's just directly gonna put them uh, into these categories. So once we're done with the mapping, now we do create a function which is assign category function, and it takes the product and then it's gonna put it into the category. Now here in the apply categorization, we use this function, and then when we do categorize these things, acha, one more thing to tell you is that when we are categorizing, it's not case sensitive. So if that product is already in the Excel sheet in different case, so it's just gonna come there, and then when we get the data, we save it in the Excel, and then we just, in order to clean the data and just get the categorized, we use this clean function, and so we are good with the data. Moving on to the second procedure that we do, the second step. uh, Scroll down please, Faiz Nicho. Correct, correct, correct. ठीक है. Now, now the result of the data in the form of graph, the result, the products that we got, and this result is actually about the normalization that we're gonna perform in the second step of the code. Next. Now this is the second step of the code. Uh, so in here we actually also normalize the data. So as we know, we just start with the libraries that we already have, and then we, okay. Uh, Now here, since we normalize the data in the previous part, uh, one more thing to clarify, that we normalize the data in order to uh, get a standard way to compare the data. Otherwise, it's quite difficult or inappropriate to compare the data, so we normalize it. And there were graphs that I previously showed you to normalize them. Coming to the cosine similarity, so in the cosine similarity, here we actually compare the data now, for which we had already set the previous the previous environment that we got. uh, we actually categorized them and did everything. Now we're comparing them, and we're also applying thresholds. Now, usually the cosine similarity compares the data uh, for even 0.1 or 0.2 values, but this isn't what we need, because this comparison would not be useful. So we use these thresholds: 0.6, 0.7, 0.8.
Furthermore, moving on to the visualizations, we, in order to show these things in the form of graph and then save them in in the Excel files, we apply this Here, code. And now this is the data that we get. uh, फाइज after एक मिनट ऊपर applying. करना, एक मिनट कोड कोड पे लाना. Okay. Wait a second. Wait. हम्म, अच्छा हाँ ठीक है. सो वी नीचे आओ नीचे आओ. So there is a hash map function that we use. Sorry, heat map function, not hash map. So in the heat map, they actually tell us about the data or the outputs in the form of colored outputs, and the intensity of the color tells us about the data. हाँ अब नीचे आओ. Now the output is gonna make complete sense of what we're doing. So yeah, so these are the outputs of the data, and these are the heat maps. Now moving Next one, on to the third threshold in matrices. yeah, so we load these threshold matrices again. From we actually save those threshold results that we got, that we found in the previous part of the code. And then now our main focus is to show the data that the cosine similarity that was built upon a specific threshold. We saved it, and now we're going to show those things in the form of graph. So so this is all the code for the graph thing, and here we do have the Quick graphs. graphs. Yes. And now we see, if you find Nietzsche. So if we change the threshold, there is a significant change in the number of edges, in the vertices, and in the weights as well. So this is clearly shown in these graphs. These graphs are quite different in the lengths and all that uh, aspects. Network graphs. Now, the compute centrality measures, Phi is gonna cover this part. No, no, no. Uh, so basically, here we have like Aram has already covered for the last three parts of CPI data, their normalizations, and then moving on forward, doing cosine similarities and applying threshold, generating networks. So now, next we are gonna create the network graphs on last week date for their different centralities like degree, centrality, closeness, eigenvectors, and betweenness. For start, we are gonna give them like 0.25% for every of these centralities to add up them to one of the weight, and then after applying correlation symmetries on them, we get a uniqueness between them, like which one goes more upward or like downward. कौन like more similar है हम उन्हें रिटेंटेंट करके आउट कर देते हैं, देन जो यूनिक होती हैं लाइक एट द सेम टाइम वो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं जा रही होती, हम उन्हें लाइक ये कर देते हैं कि वो यूनिक है, सो हमें उस डिग्री को मोर ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं. 0.25 जो हमने स्पेसिफिक लाइक रखी हुई थी उसे खत्म करके चेंज कर देते हैं और डिग्री सेंट्रलिटी को लाइक उसकी वैल्यूज को उस तरह चेंज करके देन इन्हें फाइंड आउट करते हैं. तो उन बेसिस पे हम लोग ये अपने अब like decrease centrality or closeness centrality, betweenness or eigenvectors in सबके heat maps and then get generate using these all of the graphs हमने like इस वाले में generate किए. So moving on to the next one. अब जो हमने लाइक पिछले में किया था, अब इसमें लाइक हम लोग एक वेटेज उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं. हमने पिछले में लाइक डायरेक्टली किया था, अब हम इन्हें स्पेसिफिक वेटेजेस एंट्रोपी बेस्ड ये सब लाइक फंक्शंस यूज करके इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक एक वेटेज, जो कि एक स्पेसिफिक फार्मूला जो कि हमने इधर वेट को सम अप करने के लिए वन पे लगाया, एंड देन इनको स्पेसिफिक लाइक साइड साइड करके किसको ज़्यादा वैल्यू मिलनी है, किसको कम मिलनी है, लाइक इस पे हमने कैटेगरीज को प्रोवाइड किया. देन उसकी बेसिस पे जो सिटीज के आपस में रिलेशंस आ रहे हैं वो यूज़ करके उनकी क्लोजनेस, बिटवीनेस और इनकी वैल्यूज को असाइन कर दी यूज़ करके, एंड देन
जो कि रैंकिंग में हाई, ज़्यादा डिग्री में क्लोज है, एंट्रोपी है उनमें, या ज़्यादा कोरिलेशंस हैं, उनकी बेसिस पे हमने इन्हें मोर वैल्यूज, लाइक मैं एक सेकंड नीचे करके दिखा भी देता हूँ कि उन्हें मोर वैल्यूज लाइक सॉरी मोर वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, उसकी बेसिस पे इनके ये एंट्रोपी बेस्ड और ये सारे कैटेगरीज और इन सब बेसिस पे ये ग्राफ्स हमने वेटिंग की अकॉर्डिंग सिटी बेस्ड पे हमने इनके ग्राफ्स लाइक क्रिएट किए, और देन हाँ से वेटिंग मेथड के थ्रू हमने ये सब लाइक वो स्पेसिफिक डिग्री में ली थी, देन को रिलेशंस लगाए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी लाइक कम होगी, जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन की थी, उसकी बेसिस पे हमने ये वाले ग्राफ्स की वैल्यूज इन्हें दे के ऑन द सिटी बेसिस ये प्लॉट किए। देन अगर हम नेक्स्ट वाले पे आए तो इस पे हमने अब हैसिक डायग्राम अपने जो टेम्परेल रिलेशंस लाइक एक ईयर में हमारे 2 ईयर्स लाइक 2023 और 2024 थे, तो हम लोग इसमें डिफरेंट एजेस लाइक अगर हमारे पास स्पेसिफिक 2023 में 10 एजेस हैं और 2024 में 15 आ गए, बट स्पेसिफिकली वो जो 10 2023 के थे यही एजेस 10 उसमें 2024 में भी चले जाते, तो लाइक 2024 में 2023 के एजेस कवर हो रहे हैं, तो ये उसमें लाइक गेन कर रहा है, अभी तक है उसमें, तो इनके हेजिक डायग्राम के वो एजेस इसमें अभी तक कंटेन्ड है। तो हमारा ये है कि हमने इस पे लाइक हेसिक डायग्राम के लिए हमने तीन वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, एंटी सिमेट्रिक और तीसरा एंटी सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव, ये तीनों के फंक्शंस लगा के इनको आपस में लाइक इन एजेस की बेसिस पे जो भी मैंने एक्सप्लेन किए थे अच्छा फाइल, उनकी सॉरी बेसिस टू पे ये तीनों इंटरप्ट, प्रॉपर्टीज हमारे को पास सेटिस्फाई किया है, एंड देन हमारे पास उनके डेढ़ आपस मिनट में रह गए। हेसिक डायग्राम्स की ये ग्राफ्स डिस्प्ले कराए फाइज, सारे इसको के। सॉरी यस। टू इंटरप्ट, हमारे पास अब 1 मिनट रह गया, तो उसमें हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, और साथ हम कुछ ओके फाइल्स जो ओके हमारे पास सेव हुई थी वो भी दिखा देते हैं। ओके सही है, तो ये हमारे लाइक उसके जो एचएस की डायग्राम्स थी जो उसने गेन रखे हुए, तो वो सारे, देन ये लास्ट वाला हमारा लाइक ओवरऑल सारी उनकी कैटेगरीज का एक विजुअलाइज्ड वाला वर्जन के सारों में लाइक जो सेंट्रलिटीज के बने थे, एंट्रोपी, जो मेन मेन लाइक ग्राफ्स आए थे, सो इन सब के बेसिस पे जो हमने पिछले सारे शो किए हैं उनके बेसिस पे ये वाले ग्राफ थे। ओके, सो नेक्स्ट एक हम लोग ये सीपीआई की जो हमारी फाइल, एक सेकंड मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारी जो लाइक मुख्तलिफ वो बनी थी, इनमें से एक ये कैटेगराइज सीपीआई वाली ले लेते हैं, एक्सलेक्स जो इन्हें रन करने के बाद बनी थी, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, सो हियर ये है वो फाइल, लाइक इसमें हम अगर इस फाइल को देखें तो इसने बेसिकली अपने ये जो स्पेसिफिक कैटेगरीज थी लाइक पीक आ रहा था हमारे फूड स्टेपल्स और ग्रेन्स के उसमें, फिर मटन मीट में आता है, तो इन्हें लाइक कैटेगराइज कर दिया, जो हमारी 7 स्पेसिफिक कैटेगरीज में ली हुई थी। सो ये था हमारे लाइक सारे कोड को जनरेट करके, और कुछ बीच में से एक्सलेक्स जो एक्सेल्स की हमारी फाइल्स बनी हुई हैं वो सारी, एंड देन ठीक जो है। पीएनजी है, so yeah, ठीक है, that's ओके, all. थैंक यू।